tough. She's ambitious. She knows exactly what she wants. A perfect example of beauty with brain, our guest of honor, Miss Renu Bora. Guys, please welcome her with a round of applause. Very good. Please be seated, and ma'am, thank you very much for taking out your precious time. Settle down, everyone. Let's begin with the reward ceremony. The hardest the journey, the strongest you will become. So we are going to start from star of the week. So from morning batch, anyone can guess who is he from morning batch or she? It's Vinay Singh Bist from morning batch. Yes, it's Hari Om Sharma. Give a big applause for him. Yes, it's Parth Tiwari. Guys, give a big applause for him. Yes, it's Miss Shanti. Give a big round of applause for her. I wish a very cheerful morning to respected sir and all my dear friend. Thank you so much, sir, for giving me this award. I am very happy. I am here. Thank you so much. It's Vipin Agri. Give a big round of applause to him. First of all, thank you so much, sir, and thank you all of you for giving me this opportunity. And I spent there a long time, and my experience is very good there, because lot of time when I start learning this language, so that time I face lot of problem. And so there was saying that a river cut through rocks because of not its power, because of its persistence. So same thing, if you want to achieve anything in your life, so we have to always put our extra effort. Without extra effort and without hard work, we can't achieve anything. And same thing also, we have to, if the people are not laughing at your goal, so that time we can understand, we can get it, our goals are very small, and we should work upon it. Because if you have power, if you have if you are a good personality, so everyone give you respect. Otherwise nobody care. Only our parents are always care, and our teacher always support you. Thank you so much, sir, for this for support me in this position and in this stage. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Great. And one more time, guys, clap for him. So guys, it's very true to say that, you know, success is not about setting a low goal and hitting it. It is all about setting a high goal and missing it. So you're doing a great job. Just keep that up. And rest of you as well, all the very best. This is Vansh Joshi. Yeah. So he is a little Hani Singh of Excellent Academy. Everything is difficult before it is easy. Don't be afraid to take the first step. Now it's time for pre-assessment toppers. It's Shubham Bhandari. You are big applause to him. So Shubham Bhandari is not well. So because of that, he has taken a day off. So we will continue now. Now it's time for evening batch. Anyone can guess? Yes, Beena ma'am. Yes, it's Miss Beena Tiwari. You are big applause to him. Progress each day adds up to biggest results. So it's now time for star of the month. So from morning batch, it's Divya Singh. Give a big applause to her. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to express myself. I still remember the day when I joined this academy. I used to be very shy and very introvert person. I was facing a difficulty in speaking in front of public. Basically, you can say I have a public phobia. So today, I'm confident and standing in front of you. This won't be possible without ideal teacher, a great mentor and a good heart person, Manoj Khandwal sir.
All right. Sorry. No Sorry. problem. Okay, and the Excellent Academy too for giving me support and encouraging me towards my goal. And I'm grateful that I'm here, no regrets at all, and I'm glad that I received this award today. And my thank you speech won't be complete without thanking my batchmates. Thank you all. You all are wonderful, and you have given a positive environment. That's why, everyone is good, and I'm grateful first of all. And you all are wonderful and doing a great job. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you very much. So very good. Keep that up. All the very best. It is Ritu Best. Give a big round of applause. So first of all, good morning everyone. I really want to thank Manoj Kanpar sir and Excellent Academy for always guiding me and supporting me. 3 months back when I have started joining this academy, so I was very underconfident. I have a stage fear. I can't stand in front and deliver any speech. But now with the help of sir and my batchmates, I'm really very confident enough and I can stand in front of you and speak very well. So this won't be possible because of sir, and I really want to thank my batchmates because they have always supported me, encouraged me and always boosted my confidence. So thank you sir. All right. Very good. And she has been very consistent when it comes to performance, so keep that up. She has been the star of the month again, consecutively in the second month. So very good, proud of you. Ladies, starts with you, Hari. Give a big round of applause. Clap for her, guys. Very good, Sakshi. She has also got this award consecutively for the second month. Very good, keep that up. You cannot change your future, you can change your habits, and that will definitely change your future. And this is for Student of the Month. Please put your hands together for Chandni Goswami. I'm not going to say that everyone said that. First of all, I need to thank Excellent Academy, and means they all are repeated. So I am going to say that a best teacher taught us from the heart, not from the books. So I think this line is worth for Mr. Manoj Kanpar sir and Excellent Academy, because when I first came here, I am like a dull student, not dull, I am a stage fear, don't have confidence, doesn't even have personality, I am sitting behind. But after joining Excellent Academy and spending times with my batchmates, I am more than confident. I am not going to say that I am worth it or take a certificate or degree in English language, or I know it, but I am going to say I am just trying my best to give to Excellent Academy, to me, to myself, or to Manoj Kanpar sir. So thank you so much sir for giving me stage and giving me courage. That's all. You deserve that. Well done. So Chandni has been performing very well, and she has been very consistent when it comes to the performance. She has gained a lot of confidence, and the credit goes to the batchmates as well. Well done, everyone. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you successful person. So now it's time to distribute the reward for course completion certificate, and the one is Chandni Goswami. Once again. Now, Khushbu Mehra, please put your hands together for her. Last but not the least, Manish Jalal. Because of some reasons, he is not with us right now, so he will be given the certificate later on. Now I would like to, sir, please honor our guest with a token of gratitude. Come on guys, clap.
Ma'am, it's a request. Please say something. Thank you. Good morning, everyone, and respected sir. I am Renu Bora. I am from चंपावत. और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मौका दिया गया है जो इंग्लिश एकेडमी और आप लोगों की वजह से मुझे यहाँ पे आने का एक मौका मिला. आई एम सो हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. आप लोगों के बीच से ही मैं भी यहाँ पे आई हूँ. आज से 2-3 साल पहले मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया था. कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा. मुझे भी यहाँ पे देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी इतने अच्छे से रह रहे हो यहाँ पे, मतलब सीखने आते हो. और यहाँ तक कि इतना अच्छा नाम चल रहा है. इंग्लिश एकेडमी जो एक्सलेंट एकेडमी चल रही है हल्द्वानी पे. मैं मार्केट में भी जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ तो हर जगह नाम सुनने को आता है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. और सबसे अच्छा तो यहाँ पे ये लगता है कि छोटे से बच्चे, छोटा बच्चा लेके और जो बड़े हैं, मतलब कोई एज नहीं होती सीखने की. यहाँ पे मैं देखती हूँ एक छोटा सा बच्चा भी आता है और एक हमारे फादर्स लोग की एज के भी यहाँ पे सीखने आते हैं और सीख के यहाँ पे खड़े होते हैं, बोलते भी है कि हम लोग भी आप ही के बीच से उठ के यहाँ पे सीखने आए हैं. और सर इतना सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, इतना बताते हैं, और जिसको प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम सुनते हैं और इतने अच्छे से आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं. और सर को देख के बिल्कुल लगता भी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर सर है, मतलब पता ही नहीं चलता है. बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के, क्योंकि हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता है. कई बारी होता है ना, हम लोग देखते हैं टीचर से एक अपने आप में मतलब बहुत ही वो रहते हैं, और स्टूडेंट कई बार गुस्सा भी होते हैं, कहते भी हैं कैसे टीचर है क्या है करके, मतलब सामने तो थोड़ा रिस्पेक्ट कर देते हैं, पीठ पीछे भी थोड़ा सा एक होता है. मनोज सर को देख के मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि मैं भी बाहर बैठी थी, अंदर आप लोग इतना शोर कर रहे थे. कई बार होता है, अभी स्कूल में होते होंगे, बच्चे शोर करते हैं तो सर लोग कितना गुस्सा करते हैं. और मैं बाहर थी, आप लोग इतना शोर कर रहे थे, सर ने एक बार भी आपको डांटा नहीं कि इतना शोर क्यों कर रहे हो, बोल क्यों रहे हो, अच्छे से आए हो, क्लास में बैठो, मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा. इनको देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, ये आपके कोचेस है करके, एकदम आपसे खुल के मिल के रहते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता है. और यही क्वालिटी इनके अंदर है. और मैं चाहती हूँ इंग्लिश एकेडमी इतना हल्ला मचा दे, मतलब इतना शोर मचा दे, इतनी फैल जाए कि हर जगह से, हर कोने से, इस हल्द्वानी में जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी जिसको भी बोलना नहीं आता वो यहाँ पे आए. प्रिपरेशन सर करवाते हैं, हर रोज आपको सिखाते बताते हैं. आप लोग के पीछे सपोर्ट है इतना, आप लोगों को करवाते हैं, आपके गार्जियन लोग आपको भेजते हैं. तो आप प्लीज मेहनत करिए, आगे बढ़िए. हल्द्वानी में हो, यहाँ से बाहर भी जाओगे तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की, क्योंकि आज हर कहीं पे भी बच्चे से लेके आप मतलब बड़े तक भी सामने आपका क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं आता है तो बस हो गया, हमें चुप ही रहना है. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इसकी बहुत मान्यता बढ़ती है. जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसे ही मुझे लग रहा है, मुझे क्या सभी को लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंग्लिश ज़रूरी नहीं मजबूरी बन जाएगी हर एक इंसान की, क्योंकि बिना इंग्लिश के तो कुछ है ही नहीं. अभी तो चलो यहाँ पे आप हिंदी बोल लो, पहाड़ी बोल लो, चलेगा, मिक्स कर लो, मगर यहाँ से आप बाहर जाते हो, अदरवाइज आप पैसे कमाने जॉब करने जाते हो, वहाँ पे भी आप एक फ्रूट भी खरीदोगे उसको भी आप सेब दे दो, केले दे दो, नहीं बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप बाहर भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है. तो आप लोग यहाँ पे आते हो, ईमानदारी से सीखते हो और इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दिखाते हो. डेली आपको सर लोग यहाँ पे प्राइजेस वगैरह आपको सम्मानित करते हैं, उस भीड़ से आपको पहचान का मौका मिलता है. अब इतने सारे लोग बैठे हो, सबके सब तो आगे नहीं आते ना, हर किसी को मौका नहीं मिलता है, और जिसको मौका मिलता है तो वो बहुत दूर तक जाता है. और मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा सीखे, आगे बढ़े और आए, अपने फादर्स का, अपने गुरुजी का, सबका नाम रोशन करे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. थैंक यू सर. Thank you, ma'am. So sweet of you. So guys, ma'am is one of our old students and she has been very hardworking. She has been kind of working for herself and supporting herself. Her parents were also very helpful. She is a martial arts trainer and a real life fighter, I must say that. Now her father is no more, so she is kind of supporting her family as well. And she has opened her academy, martial arts academy at Block. So anybody interested, taking the training can contact her. She is a gem by heart and a very hardworking and a very devoted personality. So we all, kind of respect you and we wish you all the very best, friend. कामयाबी ना मिले ये अलग बात है दोस्तों, कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, पर हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है. ये कहना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ये सोच लेना और सोच के फिर उसे मान लेना, ये तो गलत ही नहीं, बहुत गलत बात है. थैंक यू सो मच सर.
ब्यूटीफुल लाइन। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर हम ट्राई नहीं कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो डोंट एवर गिव अप विदाउट ट्राइंग, always give your best shot, and if you put in your heart and soul into something and even if you fail, you don't really fail, you learn something out of it, and that becomes the kind of stepping stone to success. So wish you all the very best, guys, and that's it for the day. Thank you for coming.